we should be focusing more on that younger population and spreading awareness that how they can take care of their lifestyle, which includes a good diet, a healthy exercise, healthy diet, and also taking care of their stress and sleep, so that they are aware. एक simple concept बताते हैं diet में कि आप बस अपने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दो और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दो. सो वन हैज़ टू बी अवेयर. अगर आपको डायबिटीज़ है तो हार्ट, लिवर, किडनी, आइज, नर्व सबका ही इक्वली ध्यान रखना है. हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the most common and preventable lifestyle disorders, diabetes and obesity, and we'll try our best to bust some myths about these lifestyle disorders. I am Dr. Parjeet Kaur, Associate Director, Department of Endocrinology and Diabetes, Medanta Hospital, Gurugram, and with me today is Dr. Atul Chauhan today. I am Dr. Atul Kumar Chauhan, working as Chief Medical Officer with Lumax Group of Industries. So it's a pleasure to talk with Dr. Parjeet. So ma'am, as you conveyed the topic, so with the changing scenarios, what are the problems you are facing in treating the patients related to diabetes? Exactly, very right, Dr. Atul. I think it's not only that we are seeing more and more number of cases. There are a lot of challenges. What we are facing is that most commonly that we are seeing these diabetes and lifestyle disorders like obesity in younger population also. So many patients, they're not old or adult population which is visiting me these days. I'm seeing more of diabetes and obesity in adolescents, in children, in young adults. And along with that, so having said that this is becoming more common in the younger population, their diabetes behaves in a little aggressive way. So it's a very challenging to manage their diabetes, becomes challenging to take control of their blood sugars, it becomes challenging to take care of the complications. So younger the age you get diabetes, becomes more tricky and challenging to take care of the complications and blood glucose control. So that's the scenario which is changing, I feel. So basically, because we are working in a manufacturing sector and we are taking care basically at the primary care level, where we are doing a lot of screening for all our workers who are deployed in the manufacturing units. And as part of our normal schedules, we find a lot of people with raised sugar levels. So what are the things that we can do at a grassroots level so that we can enhance our screening tools also for this? Exactly. So as I just mentioned in the beginning, we are talking here about the lifestyle disorder which are preventable. So I'm really happy, first of all, in the primary care level, you are doing a great job in screening, because screening itself is a first step in picking up these cases, because we know that the incidence and prevalence of diabetes is increasing day by day, but more is the number of pre-diabetes conditions. These are like unmasked. We do not even know how many people have pre-diabetes. So yes, screening is a very important way to pick up these people. But as we're talking about what else we can do, I think awareness is what we need to start with. As I just mentioned, we are seeing more lifestyle issues in children and adolescents. We should be focusing more on that younger population and spreading awareness that how they can take care of their lifestyle, which includes a good diet, a healthy exercise, healthy diet, and also taking care of their stress and sleep, so that they are aware. They should be aware of their risk, right? So they should be aware that they are at risk of diabetes. Who all are at risk of diabetes? Anybody who has overweight or obesity, anyone who has a family history of diabetes, like parents have diabetes or siblings have diabetes. If somebody is sedentary lifestyle, if somebody is not doing physical activity. For females, if a female has a PCOS history in the past or gestational diabetes in the past, so all these become the risk factors. So they should be aware that they are at risk and they should start getting themselves tested. And anyways, the universal screening is recommended in India above the age of 30 years, that we should start testing them for diabetes. So as you suggested, ma'am, we at Lumax Group of Industries, our medical officers and the paramedic staff do conduct all these awareness sessions which are done on the shop floor also. And as part of the regular screening, we are conducting health camps in which we are taking support of all the hospitals, yours hospital also, for doing these health awareness sessions at our plant location. But still, as the scenario is changing, there are a lot of things which are developing resistance to the primitive system of medicine. So
What are the current changes or the new advancements which are available for treatment for this diabetes? Right. So as I, this is basically diabetes, you know, the beginning is always the insulin resistance, which comes way earlier than development of diabetes. What exactly is insulin resistance? Insulin is a natural hormone in our body which controls our blood sugar. So people, when they start gaining weight because of the poor lifestyle, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जब वो बाहर का खाना ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू करते हैं, तो उनका वेट बढ़ने लगता है. जब वेट बढ़ता है तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और धीरे धीरे ये स्टेज प्री डायबिटीज़ में बदलती है और फिर डायबिटीज़ में जाती है. इसलिए सबसे ज़रूरी है अगर हम उनका वेट को टैकल करें. सो ओबेसिटी मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट. And one way is definitely that we prevent them to getting obese, like by taking care of the lifestyle. But at the same time, जैसे कि आपने बताया कि medicines अब पुरानी traditional medicines में भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं. Are there any advancements? So yes, there are actually now advancements in the term that there are medications now which help in losing weight, जिसकी वजह से हमारा जो है शुगर कंट्रोल में भी बहुत फ़ायदा मिलता है. सो ये मेडिसिन्स एक तरह से वीकली इंजेक्शंस के फॉर्म में है. GLP-1 एगोनिस्ट हम इनको बोलते हैं. बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं, बट ओनली थिंग इज़ दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिट. और इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स स्प्रेड हो चुके हैं. तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और मोटापा भी है तो आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन्स एज वेल एज द लाइफस्टाइल कॉम्बिनेशन. So if you are going to your doctor, take a correct advice. Do everything under supervision. क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग इस तरह की जो दवाइयाँ हैं इनको वेट लॉस ड्रग नाम से बोल दिया है, which is actually wrong. These are not the cosmetic drugs. These are the medicines meant for diabetes and obesity, or even if somebody do not have diabetes, even for obesity they are approved. But these medicines are to be given under medical supervision. So this is one big advancement we have which are helping people in losing weight and taking care of their diabetes. So I will put forward one more thing, because the people who are working a lot of physical work, they are working 6 to 8 hours in a unit setup. They work in a lot of movement of things. Even though they are putting in best of physical efforts, but still they are not being able to lose weight. They are not being able to control their sugar levels. So what can be done in those cases? Because these are primarily the cases which we are facing in our medical rooms or in our clinics which are reporting to us. Right. So what will be your advice in these cases? Very right, Dr. Atul. I think this is a very challenging scenario कि अगर कोई effort भी डाल रहा है और उसका weight नहीं lose हो रहा है, तो first of all we need to understand कि वेट के पीछे एक जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है. इनफैक्ट 40 to 50% ऑफ कॉज ऑफ ओबेसिटी इज जेनेटिक्स. उसके ऊपर जब ये हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें एक फिज़िकल एक्टिविटी एक एस्पेक्ट है, बट हमें सारे ही एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए. फिज़िकल एक्टिविटी के साथ हमें डाइट का भी ध्यान रखना है. हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर आप देखते होंगे आपके वर्क सेटअप में हाउ पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट ऑफ देयर वर्क, एंड स्ट्रेस इटसेल्फ डिस्टर्ब योर हार्मोन्स. स्ट्रेस इटसेल्फ इंक्रीजेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स इन द बॉडी, जिससे कि और वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी हो जाती है. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. टेकिंग केयर ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट. सो हर चीज़ का अगर ध्यान रखा जाए, और सबसे ज़रूरी है ये कंसिस्टेंटली करना पड़ता है. इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, क्योंकि वी हैव सीन लोग क्या करते हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट ले लेंगे या एक स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजीम ले लेंगे कि हमने तो डॉक्टर साहब जिम किया था और स्ट्रिक्ट डाइट ली थी 2-3 महीने, लूज़ हो गया, बट जैसे ही हमने सब कुछ छोड़ा वापस आ गया. सो इसीलिए हमें ये समझना है कि अगर हम जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, मेक श्योर कि आप जो आज कर रहे हैं वो आप अगले साल भी कर पाएँ, उसके अगले साल भी कर पाएँ. सो चूज़ समथिंग विच इज़ enjoyable, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डूएबल, राइट. मेक रियलिस्टिक टारगेट्स. एंड सेम विद द डाइट. वो इस तरह की डाइट आप फॉलो करें कि जब आपको लगे कि हम अगले कुछ सालों तक या सालों सालों तक हम उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं डाइट में कि आप बस अपने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दो और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दो. इतना ही. अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ओवरऑल पोर्शन साइज आप कम कर दो, तो कोई देयर इज़ नथिंग लाइक अ वेट लॉस डाइट. काफ़ी लोग ट्राई करते हैं. तो ऐसी डाइट जो सस्टेनेबल हो, और जैसे मैंने बताया डेफिनेटली हमें स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सस्टेनेबल वेट लॉस.
So we can conclude from this thing is that the stress plays a very important role in the management of your sugar levels. It also helps in management of your weight loss program, and can control your diabetes if your stress level is reduced. So anything other that we can carry forward from this session which can be communicated from my end to my team or any other thing, so that they can manage all these cases at grassroots level? यस, सो मेरा एम्फोसिस हमेशा इसी पे रहेगा कि ये जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाते हैं। सो एवरीबॉडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जो हमें एक्शंस लेने हैं वो बचपन से लेने पड़ेंगे। द फैमिली हैज़ टू डू इट टुगेदर। सो बचपन से ही डाइट का ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना। जब हम डाइट की बात करते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को मेजरली कट डाउन करना पड़ेगा। ये एक बड़ा ही कारण है कि जिससे कि वेट पुट ऑन होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू होता है। तो ये स्टार्टिंग से ही अगर डाइट, एक्सरसाइज का ध्यान रखा जाए तो ये ना वेट पुट ऑन होगा आगे चल के, ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे। दूसरा ये कि सबको ये भी समझना है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्लड शुगर लेवल। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। सो वन हैज़ टू बी अवेयर, अगर आपको डायबिटीज़ है तो हार्ट, लिवर, किडनी, आइज़, नर्व सबका ही इक्वली ध्यान रखना है। इसके लिए इट हैज़ टू बी होलिस्टिक अप्रोच कि लाइफस्टाइल के साथ हम स्क्रीनिंग भी उनका रेगुलर करते रहें। एवरी ईयर हम उनका स्क्रीनिंग करें कि उनका हार्ट ठीक है नहीं, किडनी, लिवर, आइज़ चेकअप ज़रूर होना चाहिए, और ताकि उनको टाइमली पिकअप करके उन चीज़ों को करेक्शन कर सकें। और बिल्कुल जो भी हमें मेडिसिन्स, अगर हमें आगे के लिए, अगर आप जैसे हम पहले भी बात करी एडवांसमेंट इन द मेडिसिन्स, सो एक डॉक्टर के सुपरविजन के साथ हम उन मेडिसिन्स की नीड स्टार्ट करके अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल उनको मैनेज किया जा सकता है। सो diabetes management needs the holistic approach. It's just not about sugar, it's about lifestyle, weight management, heart, liver and kidney protection. So you shared me a lot of things which can be executed at my level. I will try to carry all this information to my team, to my management, and because we are working at the primary care level, we are screening the persons. Sometimes because of our geographical scenarios, because our units are based in far from the cities, so the reach of the tertiary care centers is you can say quite far. So basically, what are the things or what are the medicines which we can start with in a case of if they're recently diagnosed diabetic? So what all are the medicines which we can start for those cases? राइट, सो रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज़ में तो इनफैक्ट मैं एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर किसी का अभी अभी डायबिटीज़ पता चला है एंड साथ में अगर मोटापा भी है, अगर वेट लॉस कर लिया जाए तो ये डायबिटीज़ को हम रेमिशन में भी पहुंचा सकते हैं। हम इसको रिवर्सल एक सही टर्म नहीं बोलते। रेमिशन मतलब कि ऐसी स्टेज आ गई डायबिटीज़ की जिसमें कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और आपने सिर्फ लाइफस्टाइल के साथ ही अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर लिया है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए किसी को भी, अगर उसका रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, कि आप पहले अपनी मेहनत से ट्राई करें, एंड नहीं होता है देन वी स्टार्ट योर मेडिकेशंस। बट आप ये भी बात सही कह रहे हैं कि मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है अगर किसी का बेसलाइन शुगर ही बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल हम उनको उन्हीं दवाइयों से ही शुरू करते हैं जिससे कि थोड़ा वेट लॉस में भी हेल्प मिले, ब्लड शुगर में भी कंट्रोल में भी हेल्प मिले। सो वी काइंड ऑफ चूज द मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल प्रोफाइल, एंड स्टार्टिंग विद द लो along with the lifestyle always works the best. So that was very convincing, and the things like to the point that how can we take things at the primary care level. So if somebody is referred to the tertiary care center, so what are the things that he need to carry along with him so that he can seek a consultation or an opinion from a senior endocrinologist or other persons? Right. So if somebody is referred to tertiary care center, it's important that they have the recent checkup done in the form of HbA1c, which gives an average of last 3 months blood sugar level, the fasting and post meal blood sugar levels, kidney liver function test, cholesterol, urine analysis, the basic package of diabetes what we call it. उसके साथ अगर उनका कभी हार्ट चेकअप नहीं हुआ तो अगर वो इको एक करा सके, नहीं तो इट कैन बी डन एट टर्शियरी केयर सेंटर एज वेल. Eye checkup if possible done all with on hand, so that we are aware if you're meeting a super specialist endocrinologist there, if everything is in front of us, that we know that any complication is there or not,
हाउ इज़ द ब्लड शुगर स्टेटस, एंड ऑल्सो एक रीसेंट ब्लड शुगर प्रोफाइल बना ले अपने घर में, अपने ग्लूकोमीटर्स के साथ टेस्ट करके, चाहे अल्टरनेट डेज ही करें, फास्टिंग और पोस्ट मील, सो दैट जब हमारे सामने ये सिनेरियो है तब हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तो हम उस हिसाब से दवाई दें, अगर आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ शुगर मैनेजमेंट है, तो उस हिसाब से दवाई दें. And during our discussion, you talked about GLP-1s, which can be given for control of diabetes and the weight loss assistance. So, what will be the protocol, or who are the preferable cases in which we can give the GLP-1s, and whether is it easily available or not? It's a very relevant question, Dr. Atul. So GLP-1s are approved for people who have BMI of more than 27, and along with that, if they have any one complication like either diabetes, heart disease, cholesterol issues or blood pressure, and anybody who has a BMI of more than 30, there also this medication is approved even if they do not have any complication, right? These are certain approved indication. It's not for everybody. As I'm emphasizing once again, it's not a cosmetic drug, it's a medicine. As well as the availability is concerned, yes, they are very freely available medications. In fact, now the GLP-1 patent is also going to go off. We are hoping for the price to come down because currently it's expensive drug. Not everybody can afford it, but in future I'm sure the prices will go down and people will be able to afford this very good drug and a safe drug. So thanks Dr. Parjeet for sharing all the details related to this obesity and diabetes management. I will carry forward all your points and try to execute them in my organization also. And we'll try to take time so that I can have a meeting with all my teams and they are also better knowledge for this topic. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Atul, I think at primary care level, what you are doing, it's a big job. We need more and more of work at primary care level to prevent these lifestyle disorders. Thank you. Thank you. Thank you. Be aware of the lifestyle disorders. Be aware of the diabetes and obesity and how they can create complications. Adopt a healthy lifestyle. Go for regular physical activity, eat healthy, take care of less stress and sleep, and stay healthy. Thank you.